Pranam bachcho, how are you all? Hope you all are healthy and happy. Today I am very happy. Why? Because we have completed term 1 happily and now we are going to start term 2 energetically. So, hope you all are taking care of yourself. Winter is started and COVID cases are also increasing. So, you all have to take care of yourself. You should eat healthy food, which will help to gain strong immunity and follow all the necessary precautions, right? So, now before starting our study, we will start our study with a sloka of the month. So, join your hands, close your eyes. Let's start the sloka. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव तमेव सर्वा मम देव देव. Okay, very good. So today we are going to begin term 2 syllabus. So we will start with SS chapter 4. The chapter name is communication. So let's start our study. So in this chapter we are going to learn what is communication, types of communication, uses of the internet and advertising. So now, our first topic is what is communication on the Learn Well page number 180. Now, here the definition of communication. Communication is the activity of keeping in touch with others. हम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, बात करते हैं, टच में रहते हैं, अपने थॉट्स, अपने कोई भी शेयरिंग करते हैं, that is called communication. Once again, what is the definition of communication? Communication is the activity of keeping in touch with others. So here you can underline this sentence on the first paragraph of your Learn Well, first line of the paragraph of Learn Well. Communication is the activity of keeping in touch with others. It helps us to know about people, places, events around the world. Why communication is very important? Because it helps us to know about people. If we can't communicate with each other, then we can't know about people, places, events. सारे वर्ड की जो नॉलेज है, अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, नॉलेज शेयर नहीं करेंगे, देन वी can't know about this. So it helps us to know about people, places and events around the world. In ancient times, there were no means of rapid communication. Ancient times means कि पहले के काल में, प्राचीन काल में, and or you can say that early times. Early times में there were no means of rapid communication. Now what is the meaning of rapid communication? बहुत तेज़ी से हम communicate कर पाते हैं. Now in modern times we have, if you want to talk with your friends, families, relatives, then you just take your mobile and call them, right? So we have so many means of rapid communication. जल्दी से हम एक दूसरे से बात करने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं. But in ancient times there were no means of rapid communication. People had to send messages with the help of runners, pigeons or horse riders, which took a long time. So in ancient times we also learned these topics in early humans, that people had to send message with help of runners. बहुत जो तेजी से भागते हैं, भागते हैं, उनकी मदद से, या pigeons की मदद से, horse riders की मदद से उनको अपने messages दूसरों तक पहुंचाने पड़ते थे, which took a very long time. So here you can see the evolution of telecommunication. कि communication में
from the ancient times to modern time. Now we are living in modern times. तो कौन कौन से evolutions आए? So first you can see that drumming की वजह से smoke signals, then pigeons की help आई, then riders की help, then telegrams. So there are so many ancient times में evolution हुए कि there are so many types of means साधन कि उनकी मदद से they were communicated with each other. Now, in modern times, communication has become very easy. You can underline this sentence. In modern times, communication has become very easy. On the page number 181, first line of the page. Due to the invention of different means of communication, the world now seems to be very small place. Here in modern times, we are living in modern times and we have so many means madhyam, sadhan. We have so many different types of means of communications. If I want to talk with the person who is living in other country, then I don't need to take very long time. I just take my mobile phone and I can talk with him or her. So there are so many means we have. So पूरा वर्ल्ड एक एक स्मॉल प्लेस बन गया है बिकॉज वर्ल्ड के कोई भी कॉर्नर में कोई भी पर्सन है, प्लेसेस है, उनकी इंफॉर्मेशन हमें विद इन अ मिनट मिल सकती है. Human beings are social animals and share their thoughts and feelings with others. We are human beings and we are social animals. We can't live alone. हम अकेले नहीं रह सकते. We need to share our thoughts and feelings with others. So you can underline this line also. So here you can see the communication timeline. First in ancient times, small signals, pigeons, then codes होते थे. We learned in the early humans chapter that they were set some symbols to talk with each other. Then fax, then telephone, then wireless radio, mobile phones, internet, email. Now we have smartphones. Now waiting for what next? So these are the modern means. Now we are using so many modern means of communication. So here you can see mobile phones, 3D TV. Now TV भी कैसे हो गया है? Smart TV, right? We can video call the person, computer, tablets, email. We can send the email. So within a second, we can send passes our messages, social media sites, video conference. So tomorrow we are going to have live session. So live session is one kind of video conference. We can see each other and we can pass our information. Bluetooth, internet, these DTH, these antennas, wireless phone, so courier. So there are so many, we have so many modern means of modern communication. So it is helping us, these are the means helping us to communicate with communication very easily. Now the next topic is types of communication. Learn well, page number 181, second paragraph. So there are three types of communication: postal communication, telecommunication, and mass communication. So here we are going to learn the first type of communication, postal communication. The oldest means of communication is the post. Underline this statement. The oldest means of communication is the post. Which is the oldest means of, if I ask you, which is the oldest means of communication? That is post. Post is the oldest means of communication. The Postal Department of India helps us to send or receive messages. So
So in India, Indian Postal Department help us to send or receive messages. If I want to send a message, then if I want to send a letter, then I need help of Indian Postal Department. They help us to send or receive messages to other. So this is the oldest means of communication. India has the world's largest postal network. पूरे वर्ल्ड में, that is a very good thing, that पूरे वर्ल्ड में India has the world's largest postal network. Underline this statement. India. Which country has the world's largest postal network? If I ask you that which country has the world's largest postal network, that India has the world's largest postal network. There are nearly 1.6 lakhs post offices in our country. So you can imagine that how largest postal network India has. Nearly we have 1.6 lakhs post offices in our country. So that is a very big thing. So here you can see that the logo of Indian Post, Bharatiya Dak. This is the logo of Indian Post and this is the uniform of postman. आपने पोस्टमैन्स देखे हैं, अभी तो बहुत कम दिखाई देते हैं, बट दिस इज द यूनिफॉर्म official uniform of our postman and the post box. So red color post box, आप उसमें लेटर डाल सकते हो, देन पोस्टमैन आके उसमें से लेटर निकाल लेते हैं, देन पोस्ट ऑफिस में कुछ प्रोसीजर के बाद पोस्टमैन आपके घर तक वो लेटर्स आपको देने आते हैं. सो यू कैन रिसीव द मैसेज. So that is the process. So once again, what is the oldest means of communication? The post is the oldest means of communication. And which country has the world's largest postal network? India has the world's largest postal network. We can buy postcards, envelopes, postage stamps from any post office. So पोस्ट ऑफिस में से आप पोस्ट कार्ड्स, एनवेलोप्स एंड पोस्टेज स्टैम्प्स भी परचेज कर सकते हो. So here you can see that postage, there are so many different types of postage stamps. So you need to paste this stamp if you want to send a letter. This is postcard. This is postcard, this is postage stamps, and this is envelope covers. If you need to send a letter to a different city, then you need to write the address and you need to paste related postage stamp on it, and you can send the envelope or postcard. So you can buy these postcards, envelope and postal stamps from any post office. We can also send money to anyone through a money order. This is a very oldest service that you can also send money to any person who is living far from away from you in different city or different country. So you can send money order. So here you can underline this line that we can send money to anyone through money order. Money order. So now in modern times we easily use Paytm, Google Pay. There are so many different applications. We can online banking, and we can send the money to our relatives, friends, family. But जब स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे, ऐसी एप्लीकेशंस नहीं हुआ करती थी, देन पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड दिस सर्विस since that time, that money order service, and we can all send money to anyone. Rail, road, air transport are used for this purpose. So messages के लिए, लेटर्स के लिए पोस्ट ऑफिस कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं? एयर, रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट.
If we want to send a letter urgently, we can use speed post. So here one another service that post office providing us, speed post. If I want to send a letter urgently to someone, then I can use speed post. Underline this line. If we want to send a letter urgently, if we want to send a letter urgently, then which service we can use? Speed post. We can use speed post. We can also send and receive letters or parcels quickly through a private courier service. This service we are using, still we are using. That if I need to send some thing to a person who is living in different city or different country, then we can use courier service. आप ऑनलाइन परचेस करते हो, देन जो पार्सल्स आते हैं, आप किसी को सेंड करते हो कुछ गिफ्ट्स वगैरह, देन यू need to use courier services. So we can also send and receive letters or parcels quickly through a private courier services. So in this topic, we have learned that the oldest means of communication is post. India has the world's largest postal network. एंड पोस्टल कम्युनिकेशन के मीन्स कौन कौन से हैं? पोस्ट कार्ड्स, लेटर्स, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट एंड कुरियर. सो वी कैन ऑल्सो सेंड मनी टू एनीवन थ्रू मनी ऑर्डर. इफ आई वांट टू सेंड मनी, देन I have to use money order service, and if I want to send a letter urgently, then I can use speed post. And if I want to send a parcel quickly, so I can use private courier services. So these all are the means of postal communication. Postal communication. The first type of communication is postal communication. Now, there are the second type of communication is telecommunication. So there are means of telecommunication. First means of telecommunication is telephone. First means of telecommunication is telephone. The first type we have learned postal communication. Second type we are going to learn टेलीकम्युनिकेशन. सो टेलीकम्युनिकेशन में फर्स्ट मीन्स है, मीन्स की साधन है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो है टेलीफोन. टुडे वी कैन टॉक पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और टेलीफोन. सो वी आर यूजिंग we can use telephone to talk with the person who is living in any part of the world or a telephone. It is easiest and quickest means of communication. Telephone is the easiest, सबसे easy. We need to just dial a number, and quickest, within a minute or within a seconds, we can talk with that person. So it is the easiest and the quickest means of communication. So you can underline this statement. Which communication is easiest and the quickest means of communication? Telecommunication. Telecommunication is the quickest and easiest means of communication. जैसे postal communication में which communication means is the oldest means of communication? That the post. And telecommunication is the easiest and quickest means of communication. India has more than 10 crore telephone connections, including mobile users. इंडिया के पास 10 करोड़ कनेक्शंस है, इंक्लूडिंग मोबाइल यूजर्स, एंड वी ऑल आर यूजिंग telecommunication, right? The STD, what is the full form of STD? Subscriber trunk dialing. S for subscriber, T for trunk, D for dialing.
The STD facility enables us to call people in the other cities of our country. Now, पहले के टाइम में हमारे घर पर ऐसे फ़ोन हुआ करते थे, टेलीफोन, जिस पर हम नंबर डायल करते थे. अगर लोकल करना है तो नो नीड टू कोड, बट अगर हमें जो पर्सन डिफरेंट सिटी में रहता है उनसे बात करनी है देन हमें STD कोड लगाना पड़ता था. तो एवरी सिटी इन द कंट्री हैज़ its own STD code, and we need to dial a STD code. Then after we need to dial the person telephone number, then we can call that person. So पहले STD codes हुआ करते थे. तो अगर मुझे मुंबई बात करनी है तो मुंबई का STD कोड था 022. Then first I need to dial 022. Then I need to dial that person number. फिर जाके वो कॉल लगता था, तो उसको बोलते थे STD कॉल. तो STD, what is the full form of STD? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग. सो अगर मुझे दूसरे सिटी में एक ही हमारी कंट्री के दूसरे सिटी में बात करनी है देन वी नीड टू डायल STD. सो उसको STD कॉल कहा जाता है. And full form of STD is subscriber trunk dialing. Now, the second point is the ISD. What is the full form of ISD? International Subscriber Dialing. International Subscriber Dialing. I for international, S for subscriber, D for dialing. ISD means International Subscriber Dialing. The ISD facility is used to call people living in the other country. So, if I want to talk with the person who is living in other country, then I need to dial ISD code. So, STD STD facility is for the person who is living in the different city in our country. But ISD facility is used to call the people living in the other country. Understood? Once again, so in this slide we have learned that the telecommunication is the easiest and the quickest means of communication. Which communication means type is the easiest and quickest means of communication? Telecommunication. The STD facility enables us to call people, the other person's cities of our country. And the ISD facility is used to call people who is living in the other country. STD is the person who is living in the other city of our country, and the ISD facility is for the person who is living in the different country. Got it? Okay. Now the second, fax. Second means of telecommunication is fax. Fax is the faster means after telephone. उसमें थोड़ा एवोल्यूशन हुआ एंड फैक्स आए. सो व्हाट इज फैक्स? फैक्स इज अ फास्टर मीन्स ऑफ सेंडिंग रिटन मैसेजेस थ्रू टेलीफोन लाइन्स. टेलीफोन से हम बात कर सकते हैं, बट इफ़ आई नीड टू सेंड अ मैसेज तो वो टेलीफोन से तो पॉसिबल नहीं था. तो उसके बाद फैक्स मशीन्स आए, तो उसमें हम कोई भी मैसेज रिटन फॉर्मेट में, इफ़ आई वांट टू सेंड अ मैसेज टू अ पर्सन, then I can use fax. So the full form of fax is Facsimile Automated Xerox. Facsimile Automated Xerox. F for Facsimile, A for Automated, and X for Xerox. The full form of fax is Facsimile Automated Xerox. A message sent through a fax reaches the dialed number almost instantly, and the fax facility
इंस्टेंटली क्या करते हैं, अगर मुझे आपको कुछ रिटन फॉर्मेट में मैसेज सेंड करना था, तो तब स्मार्टफोन तो नहीं थे, अभी मुझे रिटन फॉर्मेट में कोई मैसेज करना है, देन आई इंस्टेंटली सेंड अ ईमेल, आई इंस्टेंटली सेंड मैसेज, बट तब ये फैसिलिटीज़ तो नहीं थी, तो फैक्स था कि मैं कोई रिटन मैसेज पेपर फॉर्मेट में सेंड कर सकती हूँ आपके नंबर पर, और वहाँ पर आपको ऐसे पेपर में मैसेज मिल जाता था. सो दिस इज़ अ फैक्स मशीन. सो वो कैसे उसका नेटवर्क होता था, दैट फॉर द सेंडिंग अ मैसेज यू नीड टू हैव फैक्स मशीन. आपके पास टेलीफोन लाइंस होनी चाहिए. देन वो क्या करते थे, टेलीफोन लाइंस में से फैक्स सर्वर में जाता था. फिर यू नीड टू हैव इंटरनेट. टेलीफोन लाइंस जिनको आपको मैसेज सेंड करना है, उनके पास भी तो टेलीफोन लाइंस और इंटरनेट होना चाहिए. एंड उनके पास भी आप जैसी फैक्स मशीन होनी चाहिए. देन दे विल गेट द मैसेज. सो ये पूरा एक प्रोसेस था कि दोनों पर्सन के पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, फैक्स मशीन होना चाहिए और टेलीफोन लाइंस होनी चाहिए. सो ये पूरा एक प्रोसेस था जिससे वो मैसेज आपको रिटन फॉर्मेट में पेपर पर प्रिंटेड मिल सकता था. सो सी, आपको ऐसे मैसेज मिल जाता है पेपर फॉर्मेट में. सो you need to have papers also. So fax is a faster means of sending written messages through a telephone lines. Okay. Now the next means of telecommunication is mobile phone, and we all are familiar with it, right? We are using this phone. Mobile phones are wireless telephones that can be carried anywhere. We have mobile phones and we can carry this mobile phone to anywhere. And this is wireless. We know mobile phone को wire की ज़रूरत नहीं होती है. Mobile phones are wireless. We can send SMS. Now what is a full form of SMS? Short Message Service. Short Message Service. S for short, M for message, S for service. Short Message Service through mobile phones. पहले जब इंटरनेट नहीं हुआ करते थे, पहले देखो ऐसे फ़ोन्स यूज़ हुआ करते थे ना, सिंपल से. स्टिल आवर ग्रैंड पेरेंट्स दोज वुड कांट यूज़ स्मार्टफोन्स. जिनको स्मार्टफोन्स चलाना नहीं आता, उनके पास ऐसे सिंपल फ़ोन हुआ करते हैं. तो उसमें इंटरनेट की फैसिलिटीज़ बहुत ही रेयर होती है. तो उस टाइम पर जब इंटरनेट नहीं हुआ करते थे, तब SMS सर्विसेज का ज़्यादा यूज़ होता था. शॉर्ट मैसेज सर्विस. इफ़ आई नीड टू सेंड अ मैसेज, तो मैं आपको SMS कर सकती थी आपके नंबर पर. उसको बोलते हैं शॉर्ट मैसेज सर्विस, SMS. स्मार्टफोन्स हैव फर्दर चेंज द नेचर ऑफ मोबाइल फ़ोन यूसेज. फिर स्मार्टफोन्स आए, उसमें इंटरनेट कनेक्शंस आया. पहले सिंपल मोबाइल हुआ करते थे, उसमें आप SMS कर सकते थे या कॉल कर सकते थे. देन आया स्मार्टफोन. वी आर यूजिंग स्मार्टफोन. राइट नाउ you are using smartphones. So now apart from calling and sending messages, one can click picture, shoot videos, play games, surf the internet, etc. on the phone. Now with the use of smartphone, we are not using only the smartphone only for calling and sending message, but apart from calling and sending message, we can click pictures, shoot videos. For example, right now I am shooting the video. प्ले गेम्स, आप गेम्स प्ले कर सकते हो. सर्फ द इंटरनेट पर कुछ भी सर्च कर सकते हो. यू कैन यूज़ द इंटरनेट ऑन योर स्मार्टफोन. एंड बहुत सारी फैसिलिटीज़ आप स्मार्टफोन में कर सकते हो. सो
This is a telecommunication mobile phone. Now we have completed two types of communication. First, postal communication, telecommunication. In telecommunication, there are three means: telephone, fax, and mobile phones. Now, the third type of communication is mass communication. The third type of communication means mass communication. Now, what is called mass communication? When we have to convey a message to a large number of people at the same time, we use the medium of newspapers, radio, television, books, etc. These are all means of mass communication. Now, what is called mass communication? When we have to convey a message to a large number of people at a time, then we use a medium of newspaper, radio, television, book, etc. This is the this communication is called mass communication. And newspaper, radio, television, books, etc. are the means of mass communication. Now the mass communication कि जब एक ही पर्सन को बहुत सारे पर्सन को कोई भी मैसेज देना हो, एक साथ बहुत सारे पर्सन को सेम टाइम पर मैसेज देना है, देन उसको बोलते हैं मैस कम्युनिकेशन. सो जैसे न्यूज़पेपर, एक ही न्यूज़पेपर सबके पास आता है और उसमें एक टाइप की ही इंफॉर्मेशन न्यूज़ होती है, तो न्यूज़पेपर इज़ द मीन्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन. राइट. रेडियो पर जो टीवी पर आप जो प्रोग्राम्स देखते हो, न्यूज़ देखते हो, गेम्स देखते हो, व्हाटएवर, तो एक ही टाइम पर हर कोई वही चीज़ एक साथ देख सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो मीन्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन. बुक्स, magazines are also means of mass communication. So these are the means of mass communication. So what is called mass communication? Then when we have to convey a message to a large number of people at the same time, that is called mass communication. The first means of mass communication is radio. The process by which information is sent out over a radio and TV is called broadcasting. Broadcasting. Now what is called? This is a very important line. You can underline it. Mass communication on the page number 182. Mass communication में first means is radio. Now first line, the process of by which information is sent out over radio and TV is called broadcasting. रेडियो और टीवी पर जो प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशन सेंड करने की, फॉर एग्जाम्पल रेडियो पर आप न्यूज़ सुन रहे हो, तो न्यूज़ रेडियो में से आप तक आ रही है, तो क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन आपको सेंड हो रही है. किस में से? रेडियो में से. तो वी कैन सी दैट रेडियो में से न्यूज़ क्या हो रही है, ब्रॉडकास्ट हो रही है. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग. रेडियो में से न्यूज़ आप सुन रहे हो, बहुत सारे लोग वही न्यूज़ सुन रहे हैं अपने घर पर बैठे बैठे, तो वी कैन से दैट द रेडियो इज ब्रॉडकास्टिंग दिस न्यूज़. तो उसको, वो प्रोसेस को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग. ब्रॉडकास्टिंग. वंस अगेन, व्हाट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग? The process by which information is sent out over a radio and TV is called broadcasting. The All India Radio. Now, Indian रेडियो नेटवर्क है, उसको बोलते हैं ऑल इंडिया रेडियो. आजकल इन मॉडर्न टाइम्स वी हैव सो मेनी रेडियो नेटवर्क्स, प्राइवेट रेडियो नेटवर्क्स, दैट रेडियो मिर्ची, बिग FM, सो मैनी. बट पहले जब रेडियो निकले तब इंडिया का एक रेडियो नेटवर्क हुआ करता था, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो.
उसको आकाशवाणी बोलते थे, that broadcast news and programs in English, Hindi and regional languages. So पहले टीवी नहीं थे, तब रेडियो थे, और रेडियो में एक ही नेटवर्क हुआ करता था, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी। तो आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, ब्रॉडकास्ट, रेडियो में से कोई भी चीज़, प्रोग्राम्स और न्यूज़ आपको मिलते हैं, उसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट। सो ब्रॉडकास्ट न्यूज़ एंड प्रोग्राम्स इन Hindi, English and regional languages. Regional languages means कि there are different types of states, and every states, every region has their language. For example, we are living in Gujarat, we are Gujarati, so our language is Gujarati. In Punjab, Punjabi. Maharashtra, Marathi. So these are called regional languages. So All India Radio, Akashvani broadcast news and programs in Hindi, English and regional languages. It is very popular means of mass communication, especially in villages. So in villages, जहाँ पर फोन्स, टेलीफोन्स नहीं हुआ करते थे, टीवी नहीं हुआ करते थे, तो अभी भी इन विलेजेस रेडियोज़ तो हर जगह हुआ करते हैं. तो इट इज़ अ वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन, स्पेशली इन विलेजेस. नाउ आफ्टर रेडियो एवोल्यूशन हुआ मैस कम्युनिकेशन में टेलीविज़न. Just like the radio, information is also broadcast over television. रेडियो के जैसे ही टीवी में भी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट होती है. जैसे रेडियो में न्यूज़ और प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होते थे, वैसे ही टीवी में भी न्यूज़, प्रोग्राम सब ब्रॉडकास्ट होते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कॉल्ड टेलीकास्टिंग. टीवी में जो ये ब्रॉडकास्टिंग की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं टेलीकास्टिंग. यू कैन अंडरलाइन दिस. The second means of mass communication is television. So what is called telecasting? Just like the radio, information is also broadcast over television. This process of broadcasting called telecasting. Television is better than radio because we can also watch what we are listening to. So television is, we all know that television is better than radio, because in radio we can only listen the news and program, but in television we can also watch what we are listening to. But in television हम जो सुन रहे हैं वो देख भी सकते हैं. Cable connections and dish antennas, DTH and direct to home. DTH, what is the full form of DTH? Direct to home. पहले जस्ट दूरदर्शन ही हुआ करता था, बट अभी तो हम बहुत सारी डिफरेंट चैनल्स, बहुत सारी देख सकते हैं थ्रू केबल कनेक्शंस. DTH थ्रू हैव नाउ डिजिटलाइज्ड, प्रोवाइडिंग कवरेज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड की बहुत सारी चैनल्स अलग अलग लैंग्वेजेस में, किड्स चैनल्स होती है, स्पोर्ट्स चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, रीजनल चैनल्स, entertainment channels. So there are so many channels DTH provide to us, and we can enjoy it. Now the third means of mass communication is cinema. Cinema is another popular means of mass communication. It provides entertainment and has a mass appeal. सो सिनेमा, हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो मूवी कैसे मैस कम्युनिकेशन का एक मीन्स हुआ कि कोई भी मूवी में कोई भी मूवी एक मैसेज कन्वे करती है कि मूवी थ्रू हमें कोई ना कोई नॉलेज मिलती है या मैसेज मिलता है. तो एक ही मूवी बहुत लोग एक साथ देख सकते हैं, है ना, सिनेमा में. सो सिनेमा मूवी is the another popular means of mass communication. It can play a powerful role in shaping the public opinion. So movie एक powerful role play करता है public के positive opinion के लिए. For example, if I want to give the example, तारे ज़मीन पर, आप सबने वो मूवी देखी, right? This movie is the example of mass communication. सिनेमा हुआ,
तारे ज़मीन पर मूवी में वो मूवी में एक मैसेज था कि एवरी चाइल्ड हैज़ देयर ओन डिफरेंट यूनिकनेस पोटेंशियल, कि हर एक बच्चे में अपना एक खुद का एक पोटेंशियल होता है, खुद का एक यूनिकनेस होता है, एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट इट. सो वो मूवी के थ्रू हमें क्या मैसेज कन्वे हुआ कि हर एक बच्चा बहुत ही वैल्यूबल है, बहुत इम्पोर्टेंट है. सो वो मैसेज एक ही मूवी में से वो मैसेज लाखों लोगों को मिला. दैट वाई सिनेमा इज द मीन्स ऑफ mass communication. Now the fourth means of mass communication is newspaper and magazines. So newspapers and magazines are most popular and cheapest means of mass communication. Here you can underline the sentence that the newspapers and magazines are the most popular and cheapest. Newspaper आप 2-3 रुपए में खरीद सकते हो और मैगजीन्स भी सस्ती आती है. सो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स के थ्रू नॉलेज कन्वे होता है टू द many people. Newspapers are printed in many languages and are sent to many places all over India. Newspaper also printed in many languages and sent to the many places all over the India in different state. किसी के घर इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है, किसी के घर हिंदी आता है, किसी के घर गुजराती होता है. सो इन रीजनल लैंग्वेजेस न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड and sent to the different parts of a country. And the fifth means of mass communication is satellite. So satellite through भी communication हो सकता है. This is the means of mass communication. How? Let's see. Satellite have brought about a revolution in the field of communication. Satellite के आ जाने से कम्युनिकेशन फील्ड में बहुत बड़ी क्रांति आई. रिवोल्यूशन मीन्स क्रांति. Communication satellite help us in receiving live telecast and connecting people in other countries of the world on phones. सो सैटेलाइट के आने से ही इंटरनेट हम यूज़ कर सकते हैं एंड वी कैन कनेक्ट द अदर पीपल हु इज़ लिविंग इन द अदर कंट्री ओनली बिकॉज ऑफ सैटेलाइट. वेदर फोरकास्ट मीन्स पूर्वानुमान. भविष्यवाणी जो हम वेदर की कर सकते हैं कि विद इन अ वीक वेदर ऐसा होगा, बारिश आएगी, ठंड पड़ेगी, तो दैट इज़ कॉल्ड वेदर फोरकास्ट. वेदर फोरकास्ट आर ऑल्सो पॉसिबल थ्रू सैटेलाइट. They help farmers and fishermen at sea to take precautions against sudden changes of weather. So weather forecast farmers और fishermen के लिए बहुत ही important है because according to weather forecast then they can take precautions against sudden change of weather. They will get to know that 2 दिन के बाद या इस वीक में वेदर ऐसा होगा. सो दे कैन टेक प्रिकॉशंस अगेंस्ट देम, राइट. सो सैटेलाइट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट playing role to the mass communication. So here you can see the picture of satellite. Satellite have brought about a revolution. Computer. Now the next means of mass communication is internet. We all are using internet and we like to use internet, right? So without internet we can't imagine our mobile phones, smartphones. So internet is a means of which communication? Mass communication. So computers in different parts of the country are linked together by means of telephone lines. टेलीफोन लाइन्स से कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है. These are called networks. So here you can underline the sentence that
On the page number 183, third paragraph, internet. Now what are called the networks? Computer in different parts of the country are linked together by means of telephone lines are called networks. पहले जब लैपटॉप नहीं थे या स्मार्टफोन नहीं थे तो कंप्यूटर थे घर में, तो कंप्यूटर पर अगर इंटरनेट आपको यूज़ करना है देन यू नीड टू गेट द टेलीफोन लाइन्स. आपके पास इंटरनेट के लिए टेलीफोन लाइन होना, अभी इंटरनेट के लिए टेलीफोन मोबाइल नंबर चाहिए. सेम ऐसे जब कंप्यूटर्स हुआ करते थे तब आपको इंटरनेट कनेक्शन के लिए टेलीफोन लाइन्स चाहिए थी. वो टेलीफोन लाइन्स हर एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती थी और वो कंप्यूटर्स टेलीफोन लाइन्स थ्रू कनेक्ट होते थे, उसको बोलते हैं नेटवर्क्स. These networks are further together by means of network of computers, collectively called the internet. वो सारे नेटवर्क्स कनेक्ट होके इंटरनेट की फैसिलिटी बनते थे. So here you can see the internet. मोबाइल फ़ोन we can use इंटरनेट हम यूज़ कर सकते हैं. डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर्स, printers, communication we if I want to video call you then I need internet connection. प्रिंटर भी इंटरनेट कनेक्शन थ्रू ही यूज़ होता है. सो इंटरनेट कनेक्शन बहुत without internet connection we can't imagine our daily life because we need internet connection. The internet is an international network. By using search engines like Yahoo, Google, etc. on the internet, we can get information of any topic. Now, you all are familiar to Google, right? If you need to search and get the information of any topic or place, then क्या करोगे? इंटरनेट ओपन करके गूगल में टाइप करोगे and within a second you will get the information about this particular topic. That is very simple and quickest and easy. The internet is the fastest means of communication. Which is the fastest means of communication? The internet. It also helps people to send emails. Now what is a full form of email? Electronic mails. Email is the full electronic mails is the full form of email. If I need to send a letter or document file to a person, then I need to send through email. The email is it also helps people to send emails instantly to any part of the world, keeps updated, providing us with the latest developments around the world. So internet हमें updated रखता है to providing information and developments around the world. Internet through we can right now in this pandemic time, internet is the only way that हम अपनी study continue रखी है. Without internet we can't continue our study. So internet से ही internet through we can get the knowledge of any topic, we can study online, so we can update ourselves. तो without internet we can't imagine कि हम इस टाइम पर भी ऐसे कोरोना टाइम पर भी हम अपनी स्टडी कर सकते हैं, है ना. Now the next is advertising. Advertising is a type of communication which provides publicity to certain products and services. If you need to sell any product, if you need to convey a message through publicity, then आपको वो प्रोडक्ट की, वो मैसेज की एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी. It uses telecommunication devices such as mobiles, telephone, etc.
सो एडवर्टाइजिंग कहाँ पर आप देख सकते हो, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस. सो देयर आर so many means: mobile phones, telephone, television, mass communication, radio, newspaper. So these are the means which we can through which we can advertising our product. Advertising has also become a strong media in last few years. If I want to convey my message, if I want to sell a thing, that advertising has also become a strong media in last few years. It's not only sales product. Through advertising, we we can not only sell the product but also spread a social awareness. For example, अभी पेंडेमिक चल रहा है, टाइम कोरोना टाइम, तो you can see on TV, you can hear on मोबाइल फोन्स सो मैनी एडवर्टाइजमेंट्स कि जो कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही है, बट थ्रू एडवर्टाइजमेंट आपको एक मैसेज दे रही है कि वेयर योर मास्क, वॉश योर हैंड्स ऑफन. सो हेल्थ अवेयरनेस के लिए, या फिर सेव वाटर, सेव अ गर्ल चाइल्ड. सो ऐसे सोशल अवेयरनेस मैसेज भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें मिलते हैं. सो एडवर्टाइजमेंट ओनली एक सेलिंग के लिए, कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए तो होती ही है, बट राइट नाउ इन मॉडर्न टाइम्स कोई सोशल अवेयरनेस के वो मैसेज से लोगों में पॉजिटिव चेंज आए, हमें कुछ सीखने को मिले, वो अवेयरनेस मैसेज भी हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दे सकते हैं. सो एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो मीन्स ऑफ mass communication. So here we have completed the chapter. Now in this chapter now I know that communication means to keep in touch with each other. Post mobile phones, fax, the internet are the different means of communication. There are so many means of communication. The internet is the fastest means of communication. Radio and TV are the most effective means of mass communication. Newspaper and magazines are the most popular and the cheapest means of mass communication. Advertising provides publicity to certain products and services. So here children, we have completed this chapter. Now after this watching this video, first you need to read the chapter from your Learnwell. If you don't understand anything, if you have any doubt, then you can ask me tomorrow in live session, and it is compulsory to attend the live session, okay? And you can please keep the Learnwell study note and your activity book with you on your live session, okay? So thank you children, have a good day, take care.